So the beginning of polymerase chain reaction, you can see the sample of DNA on the left hand side. Within that sample, let's say if I want the length of the DNA जो amplify करना है मुझे वो वाली चाहिए जो blue color में है, ठीक है? Blue वाला नजर आ रहा होगा, right? अच्छा, now what do I do? I will have to separate these two DNA strands away from each other. I will have to separate them. Okay? Separation requires that I either use an enzyme, but I don't have an enzyme. It's very, very expensive to get natural or synthetic enzymes, so I apply heat. Acha, Abdullah, just give me a minute. In fact, I'm just coming back in a minute, or jo hai wo, in the meantime, you just read it. पहले आप DNA लेते हैं, then you add two small strands of DNA, that will act as primers. Then I understood you then add wait, did you add this? You add क्या मिस क्या था? Wait, third cheese primers था. Then you add triphosphate molecules so that you can be able to make your phosphodiester bonds. So miss, like I just need to like memorize के ये कैसे like slow like ये सब कैसे add होता है उसके अंदर? Like this बिल्कुल is just बिल्कुल like whatever chain reaction I just need to remember. Exactly. Now see, you will tell the examiner. Now the examiner will ask you, why do you need to heat the DNA? So you'll say that we will be heating the DNA so as to separate the strands. We can also separate the strands. Normally body में जब DNA replication में हमें strands separate करने होते हैं तो we use the enzyme helicase. But helicase हम natural नहीं ले सकते. It will be very very costly. And synthetic भी manufacture करना on a large scale के इतने सारे आपको PCR करने, it's very costly. So the सही है, best तो thing is ठीक है going on. आपने कर लिया खुल गया। अब जस्ट लाइक आरएनए पॉलीमरेज इज ब्लाइंड ना, सो डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो ब्लाइंड कि आप इसमें एक प्राइमर डीएनए डालते हैं। प्राइमर कहाँ से लेते हैं? यू कैन इवन राइट इट इन एग्जाम्स के प्राइमर डीएनए आर ऑर्डर्ड ऑनलाइन। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं डीएनए के, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस वन एंड दिस वन। सो दे एक्चुअली गिव अ डायरेक्शन टू द डीएनए पॉलीमरेज कि इट शुड नाउ स्टार्ट कॉपिंग। ठीक है, अच्छा अब डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करेगा। वेयर टू गेट, ये तो मतलब आप हमने सोचा ही नहीं कि हम ये डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लेंगे, क्योंकि डोंट फॉरगेट that we are doing all this in the PCR machine. We are not inside the human body, we are outside the human body. So where to get this DNA polymerase from? There is a bacterium that grows in hot springs. ठीक है, क्योंकि वो हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो करता है बैक्टीरियम, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस बैक्टीरियम से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, एंड द नेम ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज यू विल हैव इज नोन एज टैक पॉलीमरेज, टैक। ठीक है, सो the advantage of using a tag polymerase in this scenario is, number one, it is heat tolerant, right? So it will not be damaged if we are performing this reaction at a very high temperature, क्योंकि हमें temperature चाहिए high। क्यों high चाहिए? क्योंकि हम we have to denature the DNA and we have to separate the two strands. So which is why we are using DNA polymerase. ठीक है, DNA polymerase भी use कर रहे हैं और हम ये भी use कर रहे हैं। अगर if you remember AS biology, तो AS biology में जब हम बच्चों को DNA replication कराते हैं, हम उनको कहते हैं कि look, for DNA replication we need helicase. ठीक है, we need helicase to separate the DNA strands, then we need prime DNA, हम सब लिस्ट बताते हैं। then we say कि अच्छा DNA polymerase, और फिर हम ये भी कहते हैं कि we need activated nucleotides। अब ये जो सारी चीजें हैं ना बॉडी के अंदर, तो they are there in the cytoplasm, सब हैं, कुछ है, थोड़ा सा हमें एटीपी चाहिए होता है और एटीपी की एनर्जी यूज करके ये सब कुछ हो जाता है। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर डूइंग पीसीआर यू आर आउटसाइड द बॉडी। सो आउटसाइड के लिए आप प्राइमर डीएनए भी बाहर से ऑर्डर करते हो, यू हैव टू ऑर्डर ऑनलाइन। ठीक है, देन यू गेट डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपका टैग पॉलीमरेज है, ये भी आप ऑर्डर करोगे, इसीलिए पीसीआर का टेस्ट एक्सपेंसिव होता है। देन आप ये भी ऑर्डर करोगे फ्री डीएनटीपीस, जिसको हम एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स कहते थे ना एएस में जब हम बच्चों को पढ़ाते थे। सो इसका असल में नाम है फ्री डीएनटीपीस। ठीक है, ये भी हम ऑर्डर करेंगे। ये सब ऑर्डर करने के बाद वी आर पुटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इन अ वेरी स्मॉल टेस्ट ट्यूब,
ये मतलब ये सब कुछ एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में हो रहा होता है, हम्म। which is a part of PCR machine, and then we allow this to happen. ये जब हम ये स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस, to see what's happening. Initially, let me go back. I had one strand of DNA, ठीक है? By the end of one cycle, I have made two strands. Then two strands से मैंने बना दिए 4. Is this exponential increase in the number of DNA? Yes. It is exponential. If it is exponential, then can you tell me what will be? So I'll हाँ repeat क्या this वो? process again. No, we are not repeating this process again. This Just process will again. go. हाँ, you have set the PCR machine in such a manner that this process will go on. Okay, let me ask you. ये जैसे अगर ये 1 DNA था ना, 1 DNA, उसके बाद बने 2 DNA, 2 DNA Yeah. के बाद बने 4. ठीक है? So I would say 1 cycle, second cycle. Okay, the question is, Abdullah, if Hmm. if I have run a PCR machine for 8 cycles, how many DNA molecules do I end up with? 18. No, exponential है, सोचो. If you started off with 8, you're saying? No, I'm saying I started off with 1 DNA molecule. Yeah. ठीक है? At the end of 1 cycle, I get 2. At the end of 2 cycles, I get 4. So at the Hmm. end of 8 cycles, I get how many DNA molecules? This is pure math. And remember that this is exponential increase in the number of DNA molecules. Yeah, so like it's always going to be doubling, right? So at the end of 8 cycles, 2 times 2 times, like I'll have to do it to the power of 8. Yes. 2 into 2 into 2 into 2 into That's 2 into 2, 2, 3, 4, 5, 256. 6. हाँ, कितना हुआ? 256. वेरी गुड. ठीक है? तो सिर्फ 8 cycles में आपने कितने डीएनए स्ट्रैंड्स बना लिए? 256 डीएनए स्ट्रैंड्स. सो दिस मींस विद इन आवर्स यू कैन मेक बिलियंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है? अच्छा, अब इसकी आती है इंपॉर्टेंट बातें कि ये यू हैव टू रिमेंबर दिस. द फॉलोइंग आर एडेड टू ईच ट्यूब इन द पीसीआर मशीन. क्या क्या? द सैंपल ऑफ डीएनए दैट नीड्स टू बी टेस्टेड, 2 different short lengths of primers, free deoxynucleotide triphosphate molecules, DNTPs. Why? They provide energy for the formation of the phosphodiester bond. Yes, I forgot to mention a buffer solution, 7 to 8. A solution of a thermostable, heat stable or heat tolerant DNA polymerase known as a Taq polymerase. अच्छा, Hmm. the PCR is switched on and left to work. छोड़ देते हैं Hmm. इसको. Each stage requires a different temperature. PCR machines automatically change the temperature. इसकी setting होती है. The tubes are very small. They hold about 0.05 cubic centimeter cube of the sample. They have very thin walls. So when the temperature in the machine changes, the temperature inside the tube also changes very quickly. Hmm. अब आपको क्या याद करना चाहिए? आपको स्टेज 1 का टेम्परेचर याद होना चाहिए 95 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? स्टेज 1 का नाम भी याद होना चाहिए. नाम है डीनेचुरेशन, 95 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? फिर स्टेज 2 का टेम्परेचर याद करते हैं हम. वेट अ मिनट. स्टेज 2 इज हियर. स्टेज 2 को हम कहते हैं एनीलिंग. एनीलिंग का मतलब एनील कर रहे हैं हम, सॉर्ट ऑफ जॉइन कर रहे हैं प्राइमर्स को डीएनए पे, और अब थोड़ी ही देर में डीएनए पॉलीमरेज अपना काम दिखाएगा. सो स्टेज 2 इज एनीलिंग एंड स्टेज 2 रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 60. ये सारा रट्टा है. इसमें रट्टा भी है, थोड़ी सी लॉजिक भी है. ठीक है? 60. Hmm. और ये सारा कुछ आई वुड एडवाइज यू स्ट्रांगली कि आप ये रीड करो. और मैं बार बार एडवाइस करती हूँ अब्दुल्ला कि जरूर Hmm. आप रीड एंड राइट पास पेपर्स करो इसके. ठीक है? Yeah, yeah. Okay. लेट मी रीड स्टेज 2. The primers bind to the base sequences on either side of the length of DNA. They do this by forming hydrogen bonds. Primers are required again because the DNA polymerase cannot begin synthesizing the DNA without an existing strand on which to build. जैसे RNA polymerase को क्या चाहिए था? प्रोमोटर. इसी तरह से DNA polymerase को क्या चाहिए? प्राइमर. समझ गए? Yeah. ठीक है? अब जैसे मैंने कहा था ना, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं,
तो नोट्स में मैंने, अब ये टेक्स्ट बुक से पढ़ने से आपको बहुत उलझन सी होती है, सो द नोट्स हैव ऑल दीज डेफिनेशंस। उसमें प्राइमर की भी डेफिनेशन है, उसमें प्रोमोटर की भी डेफिनेशन है। तो ये प्राइमर की डेफिनेशन हो गई कि इट इज अ So the notes शॉर्ट like very डीएनए। long? हाँ, Are the नो notes like नो, आई थिंक मे बी 12 say 12 it? पेजेस You और can send like me a couple of pictures like I can just go through it for now. कर दूंगी, मैं कर दूंगी, वो मसला नहीं है। प्राइमर्स आर ऑफन 20 बेस पेयर्स लॉन्ग एंड दे हैव बेस सीक्वेंसेस। याद करना कि प्राइमर भी डीएनए ही है। they have base sequences complementary to the base sequences either side of the part of the length of DNA that has to be copied। ठीक है। अच्छा, फिर स्टेज 3 आती है एक्सटेंशन, कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं। Now the enzyme DNA polymerase uses the activated nucleotides to build new strands of DNA against the exposed ones. The synthesis of new DNA strands using DNA polymerase now requires a temperature of 72। इसका मतलब स्टेज 1 जिसमें डीनेचुरेशन थी उसमें टेम्परेचर चाहिए था 95। स्टेज 2 में द टेम्परेचर दैट वाज नीडेड वाज 60 एंड स्टेज 3 में द टेम्परेचर दैट इज नीडेड इज 72। यू हैव टू रिमेंबर दीज टेम्परेचर्स। ठीक है। अच्छा, and then at the end of the first cycle, after the DNA has been copied, the mixture is heated again to begin the second cycle. Heating separates the two strands in each DNA molecule. Primers bind themselves to the start of each strand of unpaired nucleotides, and DNA polymerase makes complementary copies. After this, the second cycle, there are now 4 molecules of double-stranded DNA. ये वही वाली बात है जो मैंने कहा कि exponentially increase हो रहा है। ठीक है। अब ये Right. देखो, जस्ट टू गिव, दैट्स व्हाई आई मेड नोट्स, कि मुझे लगता था कि माय स्टूडेंट्स एक्चुअली नीड दीज नोट्स के एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमर एंड अ प्रोब। प्रोब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है। सजेस्ट व्हाई द प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर डू नॉट एनील टुगेदर। स्टेट द 4 टाइप्स ऑफ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। इनमें सारा कुछ, इस सब के आंसर्स मेरे पास हैं। आई विल शेयर द नोट्स विद यू। आई थिंक आई विल शेयर देम विद यू if not tonight, by tomorrow। ठीक है। Yeah, सही है। मैं सब कर लूंगी आपके साथ शेयर। ओके, applications of PCR. Why is PCR so important? ठीक है। So let's read this. In fact, it's 2 paragraphs. So बताओ कि क्या समझ आ रहा है? What's the importance of PCR? सही है, I got it. Got it? Yeah. PCR is now routinely used in forensic science to amplify DNA from the smallest tissue samples left at the scene of a crime. Many crimes have been solved with the help of PCR together with analysis of DNA using gel electrophoresis. सही। सही, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, लेकिन यू रीड इट एंड यू डू Yeah. पास पेपर क्वेश्चंस। इनफैक्ट Okay. जीन टेक के तो नोट्स हैं Wait, ना। what do we have left now? Like I'm looking at the syllabus as well. हम्म। I सो feel like we have like gel electrophoresis left now. I think